अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक होगा फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स। तो let us have a recap about the previous lectures. A little recap. We now know that the photosynthesis, which takes place inside the chloroplast, that are the photosynthetic sites. In the photosynthetic sites, that is the chloroplast, we find that the chemical pigments or pigment substances are aggregated in groups which are called the photosynthetic units, or these photosynthetic units which form the light harvesting complexes are also called as photosystems or pigment systems. We dealt with the Emerson's experiments, and in those experiments we come to know that about red drop or Emerson's first effect and the Emerson's second effect, that is the photosynthetic enhancement. Now that photosynthetic enhancement or the Emerson's second effect is indicative of that there must be two pigment systems or two photosystems in the chloroplast. Now these photosystems, light harvesting complexes, they have been named as photosystem first, that is PS first, and PS second, that is photosystem second. Now they have been named as PS first and PS second only in the sequence in which they were discovered, not in the sequence in which they are acting or they are functioning. Now first we will take a general outlook of a photosystem or a pigment system. As we mentioned earlier that in a photosystem there is a reaction center. Let us designate this reaction center by this. There would be a special chlorophyll A molecule. Let us take here, this is chlorophyll A molecule. I am taking one of photosystem first, that is pigment 700 chlorophyll A molecule, which is having the absorption maxima at 700 nanometers. Associated with this are other pigment molecules. These pigment molecules are chlorophyll A's, they are chlorophyll B's, they are carotenoids, that is carotenes and xanthophylls, forming a complex. Remember, they are linked to proteins and forming a complex, that is light harvesting complex, or now we call it as the pigment system or the photosystem. Now here in this photosystem we will find that there is a reaction center or photocenter. There are other pigment molecules associated with it. These are of two types, which one group which remains outside, these are called antenna molecules. So antenna molecules, and these are the core molecules. Now in this way a group of pigments is formed, a system of pigments is formed. This is called the pigment system, or we will call it as the photosystem. Now here the antenna molecules absorb light. Remember, they absorb the light of any wavelength but less than that of the in this reaction center or photocenter. Now these molecules, when they get excited, they pass on their energy via through resonance, and they pass this energy to the core molecules. Now here from the core molecules the energy is ultimately passed towards the reaction center, that is a special chlorophyll A molecule. Now here I have shown here this P700. This is the special chlorophyll A molecule
in the pigment system first and in the pigment system second, there is a chlorophyll A molecule which is having the peak absorption or absorption peak at 680 nanometers, and that have been named as P680. Now, as we have now seen that the absorption of light by the antenna molecules or the core molecules, which then pass their energy towards the reaction center, and this reaction center then extrudes the electron, and this electron which is extruded by the reaction center is then received by the primary acceptor. Now, this is the schematic diagram of a photosystem or a pigment system. Now here, in PS first, the reaction center is P700, and in PS second, the reaction center is P680. And in both cases, there are other pigment molecules forming the core and the antenna. Now here, first we will take here the distribution of the pigments in the two pigment systems. We can't take whole the pigments, especially we will have a look on the distribution of chlorophylls. Now, if I will take this in an inverted cone form, it is simple to remember because I'm showing you here this. It is very important for NEET questions. So NEET questions के लिए आप इसे अच्छी तरह याद रखें. Now I am showing the distribution of chlorophyll A molecules in both the pigment systems. Now let us show this as, this is pigment system first with the reaction center as P700, and this is pigment system second having the reaction center P680. Now here, if we will take this, the antenna side, there are the carotenoids, there are the chlorophyll B's, and there are the chlorophyll A's. Likewise in this, we have the carotenoids, we have the chlorophyll B's, and we have the chlorophyll A's. In these diagrams, I am trying to show you the distribution of chlorophyll A molecules which absorb light of different wavelengths. Let us take here, these are all chlorophyll A molecules. This chlorophyll A molecule absorbs the wavelengths from 660 to 670. Likewise, there would be another chlorophyll A molecule which is absorbing the wavelength of 670 to 680 nanometers. And then there is another group of these chlorophyll A molecules which absorb the wavelengths from 678 to 687. Then we have another which absorbs from, that is chlorophyll A molecule absorbing between 685 to 695. Then we have the chlorophyll A molecules, they are absorbing from 690 to 700. Then there are 700 to 705, 705 to 710, and some molecules absorb 720 to 735 nanometers. But the reaction center is P700. Now a question arises, can be asked, now how can we say that this P700 is the reaction center? Because by several experiments it has been found that the absorption peak or the absorption maxima is at 700 nanometers.
So that chlorophyll A molecule, which is absorbing the 700 nanometers, would be acting as the photocenter or the reaction center. Remember, this is the distribution of chlorophyll A's in this pigment system first. Now, for the neat purposes, you will remember that up till here it is same, that the chlorophyll distribution in pigment system second is same. It is 660 to 670, 670 to 680. It is 678 to 687. It is then 685 to 695, and then there is the peak absorption at 680. This is the reaction center and the photocenter. So these are the different chlorophylls and the distribution of different chlorophylls. अब यहाँ मैं इनको आपके सामने क्यों ला रहा हूँ? No doubt it is the for the higher classes, but in the NEET some questions are asked from this. तो यहाँ पर मैं आपको जो importantly हमारा question है, that would be the what is the difference between pigment system first and pigment system second. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे that we have shown here so many chlorophyll A molecules, and here we have shown a few chlorophyll A molecules, and the chlorophyll B molecules, in this case the amount of chlorophyll B molecules is very less than the chlorophyll A molecules. That means the pigment system 700, this is pigment system first, that is P700, this pigment system is having more chlorophyll A molecules than chlorophyll B molecules. But here the number of chlorophyll A molecules and B molecules is approximately the same. Now this diagram is the diagrammatic representation of a photosystem, and here in these diagrams I am showing you the distribution of chlorophyll A molecules in the two pigment systems. तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हम पढ़ रहे हैं photosystems और pigment systems. जैसे कि अर्लियर मैं ये कह रहा था कि एमरसन की इफेक्ट ने हमें ये बता दिया देयर शुड बी टू पिगमेंट सिस्टम्स. तो यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड की डिस्कवरी हुई, तो इन्हीं नाम दिया गया. तो नाम इनको दिया गया एज पर द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी. पहले पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर किया गया, दिस इज द पिगमेंट सिस्टम विद द फोटोसेंटर P700, यही डिस्कवर किया, इसका नाम रखा गया PS फर्स्ट. उसके बाद वो पिगमेंट सिस्टम डिस्कवर हुआ जिसका फोटोसेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल with the absorption peak at 680 nanometers, that is having that pigment was named as P680, तो उसका नाम रखा गया PS second. लेकिन फंक्शन में जब हम देखेंगे in the electron transport we will see सीक्वेंस फंक्शनिंग की यहाँ से स्टार्ट होती है PS second से, लेकिन this is the sequence, the naming first and second is only with regard to their discovery. तो यहाँ पर हमने देखा दैट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और जिसे हम फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कहते हैं, इसमें एक फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर होता है और उसके साथ बहुत सारे और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं. ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल एज, क्लोरोफिल बीज एंड कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स हैं. तो लेकिन जिसमें एडजेसेंट ये लिंक्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं टू द प्रोटीन्स और एक कॉम्प्लेक्स बनता है. इस कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि एक फोटो सेंटर है और फोटो सेंटर के बाहर इस साथ में हम देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं कोर मॉलिक्यूल्स, और कुछ बाहर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटेना मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम कि एंटेना मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पास करते हैं अपनी एनर्जी वाया रेजोनेंस टू द कोर मॉलिक्यूल्स, देन द कोर मॉलिक्यूल्स देते हैं रिएक्शन सेंटर को. Now it is very important क्योंकि कोर मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब करता है ये एनर्जी, it gets excited and emits or extrudes the electron which is accepted by the primary acceptor. यहाँ पर the frequency of excitation
of this photocenter is very high. As such, it cannot met with its own absorption. So it needs the help of these pigments. So it is the pigment system or the photosystem, जिसे हम कहते हैं light harvesting complex. Now we will try to understand difference between the two pigment systems. So यहाँ पर हम इसकी difference लेंगे PS first और PS second की. As we have read when we were studying the structure of chloroplast, the thylakoids are found in the form of grana, and some thylakoids remain dispersed in the stroma. So granal thylakoids वो thylakoids होते हैं जो ग्राना में होते हैं, और स्ट्रोमल thylakoids जो डिस्पर्स्ड होते हैं स्ट्रोमा में. तो पहली डिफरेंस हम यही लेंगे. PS first, it is found on the outer surface of thylakoids. Outer surface of thylakoids. ये पहली डिफरेंस हम ले रहे हैं. लेकिन PS second, this is only found on the inner surface. इनर सरफेस पे होते हैं. तो पहली डिफरेंस आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड्स पे होंगे PS फर्स्ट, और PS सेकंड होते हैं इनर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड्स. नाउ यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं दैट दे आर फाउंड इन द नॉन एप्रेस्ड. अगर आपने याद रखा होगा वहां पर जब हम पढ़ते थे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, हमने कहा ग्राना में जब कॉइलिंग होती है और थैलेकॉइड्स की पायल बनती है, तो यहाँ पर कुछ कंप्रेस होते हैं और कुछ पार्ट नॉन एप्रेस्ड होते हैं, नॉन कंप्रेस्ड होते हैं. सो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में होता है these PS second, PS first, and they are also found in the stromal thylakoids. Stromal thylakoids. तो यहाँ पर they are always found in the appressed part of the granal thylakoids. Appressed part. तो एक तीसरी डिफरेंस भी यहाँ पर हमें मिली कि they are found in both granal and stromal thylakoids, but these are only found in the granal thylakoids. तो फिर से मैं बता दूं, अंदर वाली सरफेस पे होते हैं ये PS सेकंड, बाहरी सरफेस पे होते हैं PS फर्स्ट, लेकिन ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे होते हैं, ये एप्रेस्ड पार्ट पे होते हैं. ये दोनों थैलेकॉइड्स पे स्ट्रोमल थैलेकॉइड्स एंड एज वेल एज ग्रानल थैलेकॉइड्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन these are only found in the appressed part of the granal thylakoids. यहाँ पर इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो अभी आपने देखी, that the photocenter और reaction center इसमें है, that is P700. तो यहाँ पर आप जानते हो what is that? That is P680. Okay? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, अदर पिगमेंट्स है, यहाँ भी अदर पिगमेंट्स है, लेकिन उन पिगमेंट्स में अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल्स टू कैरोटिनॉइड्स का रेशियो जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड क्वेश्चन. क्लोरोफिल फिल्स चाहे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, उनका कैरोटिनॉइड्स के साथ रेशियो जो है, दैट रेशियो इज अबाउट 20 to 30:1. In this case, it is 3 to 7:1. Now if you know a little bit of mathematics, ratio proportions, as you might have done in your 10th class, तो यहाँ पर आपको पता चल ही जाएगा, ये 20 से 30 गुना ज़्यादा है क्लोरोफिल्स कैरोटिनॉइड से, यहाँ सिर्फ 3 से 7 गुना ज़्यादा है. तो इसका मतलब PS फर्स्ट में कैरोटिनॉइड्स ज़्यादा होते हैं than the PS second. This becomes a very important question for the NEET. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरी बात कि इसमें मोर क्लोरोफिल्स होते हैं, मोर क्लोरोफिल A molecules than क्लोरोफिल B's. क्लोरोफिल A's ज़्यादा होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया इस PS फर्स्ट में, इसमें क्लोरोफिल बी से. लेकिन यहां पर हम देखते हैं दैट अप्रोक्सीमेटली द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इक्वल्स द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स. तो ये आप याद रखेंगे, PS फर्स्ट में क्लोरोफिल ए ज्यादा होते हैं बी से, लेकिन क्लोरोफिल दिस PS फर्स्ट में, लेकिन PS सेकंड में क्लोरोफिल्स और
क्लोरोफिल एज और क्लोरोफिल बीज का तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट होता है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जब एक्साइटेशन होगी, जब ये एक्सट्रूड करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उससे जो एक्सेप्ट करता है, that has been found that it has been named as X first, but now it is called that it is pheophytin. Pheophytin is the primary acceptor in this PS first, and in this PS second it is the quencher. It has been named as Q. Now remember one more difference, that this PS first is receiving the electrons. It receives electrons from PS second via plastocyanin, that is PC, and during the non-cyclic electron transport or non-cyclic photophosphorylation. Now here, this receives the electrons from the photolysis of water, and through an unknown compound which has been named as Z. The last point जो आप याद रखेंगे यहाँ पर, that this PS first, it functions in both cyclic and non-cyclic electron transport and photophosphorylation, but this PS second, it only functions in non-cyclic electron transport and photophosphorylation. That means this would be associated with the photolysis of water and the evolution of oxygen, but this is not associated with the photolysis of water or the oxygen evolution. तो यहाँ पर this was regarding the photosystems. Lastly यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ग्रीन प्लांट्स में ये देखा गया है 2 पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम है, और विच इज़ मोर लाइकली ऑफ द टाइप ऑफ PS सेकंड. तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर. तो इंशाल्लाह कल से हम बात करेंगे ऑन दिस photochemical effect which actually takes place, that's the light reaction. Thank you very much. Assalamu alaikum.